about balancing of redox equations. Let's do it. Okay, and the first method we are doing is basically the traditional method. And in this traditional method, we normally use two half equations and then we balance those two half equations to make the overall equation. ठीक है? It's exactly the same as you guys were doing in your O levels कि आप कैथोड की और एनोड की equations को अलग-अलग बैलेंस करते थे, मतलब लिख देते थे, फिर इलेक्ट्रॉन सेम करते थे, ऐड करते थे, ओवरऑल इक्वेशन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता था. ठीक है? So the first method is basically balancing using half equations. ठीक है? फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल नंबर 1. ठीक है? Only information I am giving you is that MnO4 negative is going to Mn2 plus and iron 2 plus is going to iron 3 plus. Okay? Now this is half equation 1 and this is half equation 2. Now there are two types of balancing. पहले हम material balance करेंगे. We check the material balance and then we do the charge balance. ठीक है? तो this is aqueous. ये सारे के सारे aqueous ही हैं. All these ions are the aqueous ions. ठीक है? This is the minimum information that you need. So MnO4 negative. Now you can see iron 2 plus is going to iron 3 plus. यानी जो half equation 2 है, इसमें आपके पास oxidation हो रही है. और हाफ इक्वेशन 1 में रिडक्शन हो रही होगी. यू कैन चेक MnO4 नेगेटिव में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn is +7 +7 से +2 में जा रहा है. इट मींस दैट इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है? नाउ टेकिंग हाफ इक्वेशन 1 और इसे बैलेंस करेंगे पहले. ओके, इट सेज MnO4 नेगेटिव जा रहा है जनाब Mn2 प्लस में. दैट्स द ओनली इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन. नाउ द मेथड इज क्वाइट इजी. देखें, हाउ मेनी ऑक्सीजन यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. कितने ऑक्सीजन है? 1. ऑक्सीजन कितने लेफ्ट साइड पे? ऑक्सीजन O 4 है ना. सो जितने ऑक्सीजन हैं जस्ट मेक द सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द राइट हैंड साइड. अच्छा, जो मैं बैलेंसिंग में चीजें यूज कर रहा हूं ना, आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन विद अ डिफरेंट कलर. सो जितने ऑक्सीजन थे हमने उतने वाटर मॉलिक्यूल बना लिए. ठीक है? इन मेकिंग 4H2O, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम यू यूज? कितने हाइड्रोजन एटम यूज किए आपने? 4 2 8. जितने हाइड्रोजन एटम यूज किए हैं उतने H पॉजिटिव से आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर. ठीक है? आई कैन सी दैट देयर आर 4 ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो आई मेक 4 वाटर मॉलिक्यूल ऑन द राइट हैंड साइड. हमेशा ऐसा ही होगा. जितने ऑक्सीजन हो जस्ट मेक द सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अदर साइड. एंड देन यू कैन सी दैट जितने हाइड्रोजन आपने लगाए लेफ्ट साइड पे उतने ही H पॉजिटिव आप ऐड करते हैं. ठीक है? क्लियर? नाउ चेक द मटेरियल बैलेंस. Mn1 बैलेंस है. ऑक्सीजन 4 बैलेंस है. 8 हाइड्रोजन बोथ आर बैलेंस. ठीक है? सो द मटेरियल इज बैलेंस नाउ. ठीक है? चेक द चार्ज बैलेंस. नाउ द चार्ज ऑन द एंटायर MnO4 नेगेटिव इज -1 और इस पूरे पे चार्ज कितना है? +1. और +1 वाले कितने हैं? 8. तो चार्ज कितना हो जाएगा? +8. H positive पे charge is +1 and you have 8 hydrogen, so +8 because of H positive ion and -1 because of the entire MnO4 negative. So the charge on this side is +7 and the charge on this side is +2. Now we have excess of charge on the left hand side. Now we have only one tool available. हमारे पास सिर्फ एक tool है charge को balance करने के लिए और वो है electron. And you know that electron have a charge of -1. तो हमेशा हम electron ऐड करेंगे उस साइड पे जिस साइड पे ज्यादा चार्ज है.
ठीक है, और जितना चार्ज ज्यादा है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे. सो ये हैव चार्ज ज्यादा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. कितने चार्ज ज्यादा? 5. तो वी ऐड 5 इलेक्ट्रॉन. Now, I'm sure that this equation is balanced in terms of charges. This equation, half equation is balanced in terms of material. Recalling it again, हमने क्या किया? You can copy it down, beta. Uh, 4 oxygen on the left hand side, so we added 4 H2O on the right hand side. जितना oxygen थे उतने water molecule बना दिए. While making the water molecule, हमने देखा कि we use 8 hydrogen atoms, so we balance the hydrogen by H positive because all these redox reaction required the presence of any acid. Sulfuric acid is most commonly used. So we add H positive on the left hand side, and after this the material is balanced, so we check the charge balance. उसके लिए हमने 5 electron left side पे add किया. ठीक है? And you can see the electrons are present on the left hand side, so it's a reduction equation. ठीक है? Now the second equation, half equation 2, उसे भी balance करते हैं by using the same method. Half equation 2 is quite easy. You just have iron 2 plus aqueous going to iron 3 plus aqueous. Now the material is already balanced. है ना? Material तो पहले से balance है. There is no oxygen involved, so we don't have to make water molecule. So charge on this side is +2, है ना? And the charge on this side is +3. किस तरफ charge ज्यादा है? Right side पे. और कितना charge ज्यादा है? +1. So 1 electron add कर देंगे आप, and the equation is balanced in terms of material. The equation is balanced in terms of charges. Now I'm just copying these two equations back again. मैं इन equations को दोबारा से लिख रहा हूँ. And now I'm going to add them up to make the overall equation. ठीक है? So let me just copy it down back again. So my balanced half equation 1 is MnO4 negative plus 8H positive plus 5 electron, forming Mn2 plus 4H2O. Balanced half equation 1. Balanced half equation 2 is iron 2 plus aqueous, forming iron 3 plus aqueous plus 1 electron. Okay? Now I have to add these two equations, but make sure before adding, make number of electron same. ठीक है बेटा? Before adding, make number of electrons same. So कैसे same होंगे number of electron? I can multiply the whole equation 1 or equation 2 by any number. I have a choice. The electron same करने के लिए क्या करूं? ऊपर वाली इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5. और नीचे वाली में कितने? 1. So I should multiply the equation number 2 by 5. है ना? So it become 5 electron. अब उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे. तो ऐड करने के बाद ये 5Fe हो जाएगा. मैं यही लिख रहा हूं. ये 5Fe3 प्लस हो जाएगा और ये 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. Now electrons get cancel out दोनों साइड पर. ठीक है? और मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन बनेगी MnO4 नेगेटिव प्लस 5Fe2 प्लस. देखें कभी भी आप इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन. सही है? इसलिए मैंने आयरन 2 प्लस 3 प्लस सबको मल्टीप्लाई किया. आयरन 2 प्लस 5Fe3 plus 4H2O. This is a balanced equation. And from this balanced equation, अगर मैं आपसे पूछूं कि MnO4 नेगेटिव और आयरन 2 प्लस का मोलर रेशियो क्या है, so just by looking at this equation आप बोलेंगे this is 1:5. 1 mole of MnO4 reacting with 5 moles of iron 2 plus. ठीक है? So just copy it down and then I'll give you a quick review of this back again, and then we have to do another equation by same method.
Okay बेटा, so you will be provided with two unbalanced half equation, ठीक है, and you have to balance them first and then you have to add them up to make the overall equation. So हमने सबसे पहले half equation 1 उठाई. In this half equation, MnO4 negative is going to Mn2 plus. That's the only information written with the blue is given. So I looked at the equation. I said, and I see that there are 4 oxygen on the left hand side. So जितने oxygen थे मैंने उतने water molecule बना दिए. While making 4 water molecule, I use 8 hydrogen. So hydrogen को मैंने H positive के साथ balance किया. ठीक है? So 8 H positive on the left hand side. Now the material is balanced. I check the material. Material is balanced, and I have to do the charge balance. On the left hand side, the charge is +7. The overall charge on the whole side. ठीक है? राइट साइड पे +2 था, तो मैंने जिस साइड पे चार्ज कम था वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, चार्जेस बैलेंस. एंड देन हाफ इक्वेशन 2 में भी हमने यही किया, और फिर हाफ इक्वेशन 2 में हमने इसको बैलेंस कर दिया. ठीक है, क्लियर. MnO4 8H positive plus 5 electron and iron 2 plus 5 iron 3 plus 5 electron. Before adding these two equation, we have to multiply equation 2 by 2 by 5 to make the number of electrons same. ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए. बहुत आसान सा मेथड है. नाउ वी हैव टू अप्लाई द सेम मेथड ऑन एग्जांपल 2. अगेन आई एम गिविंग यू टू हाफ इक्वेशंस. सही है. हाफ इक्वेशन है Cr2O7 2 power 2 minus going to Cr3 plus. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Okay, balance this equation and then I'll give you the equation number 2 as well. So how many oxygen on the left hand side? कितने ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड पे? तो हमने 7H2O राइट साइड पे बना दिया. ठीक है, डन. हाउ मेनी H पॉजिटिव? 7 2 14. सो 14 H पॉजिटिव हमने ऐड कर दिए. ओके, तो ये जितना ऑक्सीजन थे उतने वाटर बनाए, और जितने वाटर बनाने में H हाइड्रोजन यूज किए हैं हमने उतने H पॉजिटिव ऐड. ठीक है. नाउ check the material balance. Chromium 2, chromium 1. Chromium is not balanced. You can see, है ना? तो मैंने क्या किया, chromium balance करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया. Now the chromium is balanced. Now check the charge balance on the entire left hand side. This is 2 minus and plus 14 due to H positive. So the charge on this side is plus 12. Minus 2 is on Cr2O7 2 minus, and 14 plus because of 14 H positive ion. Charge on this side is 3 to the 6 plus 6. तो चार्ज किस तरफ ज्यादा है बेटा? लेफ्ट साइड पे कितना ज्यादा है? So I should add 6 electron. Okay, now this equation is balanced in terms of material. This equation is balanced in terms of charges. दोनों तरह से equation balance है. Most of the student making error in this chromium. याद रखिएगा, क्रोमियम को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज मटेरियल बैलेंस नहीं होगा. एंड अगली इक्वेशन इज द सेम. आयरन 2 प्लस एक्वस से गोइंग टू आयरन 3 प्लस एक्वस प्लस, यहां पे हम इलेक्ट्रॉन खुद से ऐड कर देते हैं बेटा. सो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लिख दें सारे एक्वस हैं. वाटर इज ओनली लिक्विड. ऑल देखो, जितने भी रिएक्शंस में, रिडॉक्स रिएक्शन में, whenever you write any positive ion or a negative ion, the state symbol is always aqueous. ठीक है. Now I should multiply the second equation by, to make the number of electrons same, second equation को हाँ multiply by 6 करना पड़ेगा. That becomes 6 electron. Now add them up to make the overall equation. तो overall equation हमारी बन जाएगी बेटा Cr2O7 2 minus plus 6Fe2 plus 14 H positive, forming 2 Cr3 plus 6
Fe3 plus 7H2O. ठीक है, this is basically a balanced equation. And if I ask you from this equation, अब देखो मैंने इतने लेंदी मेथड को सॉर्ट आउट करके 2 लाइंस में ही सॉल्व किया है ताकि आपको बात समझ में आ गई है, तो अब मेक इट इजियर. If I ask you Cr2O7 2 minus and iron 2 plus, what is the molar ratio? This is 1:6. 1 mole of Cr2O7 reacting with how many moles of iron 2 plus? 6 moles. So this is 1:6. ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. दिस इज अ ट्रेडिशनल बैलेंसिंग. नॉर्मली एग्जाम में क्या होता है, दिस बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. whenever there is a redox titration in practical, they ask you to balance this redox equation, and after balancing they ask you कि भाई अब आप इस molar ratio को यूज करके number of moles निकाल. ठीक है, and before I move forward, दो बातें और आपको बताऊंगा. ये जो हमने ऊपर वाली इक्वेशन, अभी जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन जो हमने बैलेंस किए, दिस इज द इक्वेशन बिटवीन K2Cr2O7 एंड आयरन सल्फेट प्लस FeSO4. हमने आयनिक इक्वेशन बैलेंस की है. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एज अ कैटलिस्ट. All redox equation almost required H2SO4 or any acid as a catalyst. ठीक है, डन बेटा. एंड दिस इक्वेशन जो हमने यहां पे बैलेंस किए, दिस इज द इक्वेशन बिटवीन K पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 plus FeSO4 in the presence of H2SO4. H2SO4 क्या है? H2SO4 is basically this acid. ठीक है, this is H2SO4. क्लियर बेटा? द की पॉइंट इज कि जितने ऑक्सीजन उतने वाटर मॉलिक्यूल बनाओ. ठीक है, बैलेंस हाइड्रोजन विद H पॉजिटिव आयन, मेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, ऐड देम अप. ठीक है, एंड मेक द ओवरऑल इक्वेशन. और इक्वेशन से आपको मोलर रेशियो मिल जाएगा. मोलर रेशियो आपको कैलकुलेशन में यूज करना होगा. ठीक है, K2Cr2O7 को हम Cr2O7 2 माइनस भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आयनिक इक्वेशन में ही बैलेंस की है. ठीक है, क्लियर है? लेट्स मी शैल वी मूव फॉरवर्ड. And I said this balancing of redox equation is very important for your practical examination. They give you a unbalanced half equation. They ask you to balance these half equation. वैसे balance हुई भी half equations दे देंगे. आपको सिर्फ number of electrons same करके add them up, make the overall equation. और जो molar ratio आएगा, you have to use that molar ratio for your calculation. ठीक है, उसी मोलर रेशियो को आपको कैलकुलेशन के लिए यूज करना होगा. जैसे ऊपर 1:5 आया है, दिस इज 1:5 एंड दिस इज 1:6. ठीक है, तो ये मोलर रेशियो आपको यूज करना पड़ेगा. डन है. नाउ अनदर मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन यूजिंग अ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है. बैलेंसिंग यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ठीक है बेटा. Now, in this equation, unbalanced overall equation is given. ठीक है, no two half equations are given. एक ही unbalanced overall equation given होगी, and you have to balance it. Now, I am going to give you an example.
एंड आई सजेस्ट कि पहले इस एग्जाम्पल को बहुत गौर से देखिए एंड देन आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी इट डाउन. नाउ एग्जाम्पल इज you have copper oxide reacting with NH3 forming copper plus nitrogen plus H2O. ठीक है. अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बैलेंस दिस redox equation. You may find the use of oxidation number helpful. यानी ऑक्सीडेशन नंबर यूज करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. देयर इज नो मार्क फॉर इट. क्योंकि उसने कहा यू मे फाइंड द यूज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हेल्पफुल. आई सजेस्ट कि जब भी ऐसा हो जस्ट सिंपली बैलेंस दैट इक्वेशन. चेक द मटेरियल बैलेंस, चेक द चार्ज बैलेंस. आई श्योर यू के इक्वेशन बैलेंस हो चुकी होगी. आप वैसे ही हो जाएगी. अभी आप इस इक्वेशन को ट्राई करें, 2 मिनट में बैलेंस हो जाएगी. बट द मेन टास्क हेयर इस लेक्चर का ये है कि मैं आपको बैलेंसिंग बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बताऊं, इसलिए हम उस मेथड को सीखते हैं एक सिंपल सी इक्वेशन पे. नाउ स्टेप 1, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all the elements. So copper and oxygen. Oxygen is -2, copper is +2. Hydrogen +1. 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 हाइड्रोजन इज +1 and nitrogen is -3. कॉपर एलिमेंट फॉर्म में है, कॉपर इज 0. नाइट्रोजन एलिमेंट फॉर्म में 0. हाइड्रोजन +1 एंड ऑक्सीजन -1. देखो, अगर तुम्हारे पास NH3 है ना बेटा, तो इसमें एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही है. ऑल्दो यू हैव 3 हाइड्रोजन, लेकिन वी राइट डाउन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 हाइड्रोजन विच इज +1. और फिर हम नाइट्रोजन की निकालेंगे, तो नाइट्रोजन की आ जाएगी -3. ठीक है. तो +1 एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वी राइट डाउन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 एलिमेंट. नाउ क्या किया, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी. हाईलाइट द एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है. So oxidation state of copper and oxidation state of nitrogen are getting changed only. सिर्फ किस किस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, कॉपर की और नाइट्रोजन की. ठीक है जी, हम इनको मार्क कर लेते हैं. So these are the oxidation states that getting changed, copper and nitrogen. हमने इनको मार्क कर लिया. ठीक है, यहां तक मुश्किल काम है, आसान है? आसान है. आपने क्या किया, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है. ठीक है. नाउ फाइंड आउट द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर. तो कॉपर की ऑक्सीडेशन में कितना चेंज आ रहा है भाई? व्हाट इज द चेंज? +2 से 0 में जा रहा है. द चेंज इज -2. एग्रीड? गुड. एंड नाइट्रोजन में चेंज कितना आ रहा है, ये भी मार्क कर लेते हैं. द चेंज इन नाइट्रोजन इज बेसिकली change is -3 से 0. yes, the change is +3. ठीक है. आई होप यहां तक का काम तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे. बट यू हैव टू डू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. उसके बाद आपने करना ये है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है. और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के बाद आपने वो एलिमेंट हाईलाइट करने हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, और चेंज आपने लिख दिया. नाउ मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर टू मेक द चेंज सेम. यानी दोनों में, यहां अगर +3 का चेंज आ रहा है तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, इट बिकम -6. अब जैसे मल्टीप्लाई बाय 3 किया है तो यू हैव टू प्लेस 3 हियर, और राइट साइड पे चेक करें. यस, राइट साइड पे भी रिक्वायर्ड है, तो यहां भी 3. मल्टीप्लाई दिस बाय 2 टू मेक इट +6. तो आपने यहां भी 2 लगा दिया. राइट साइड पे आपने चेक किया तो ऑलरेडी 2 नाइट्रोजन है, तो आपने यहां पे 2 नहीं लगाया. ठीक है. जस्ट हैव अ लुक. multiply the copper वाला change by 3 to make it -6. 3 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए कॉपर ऑक्साइड के साथ 3 लगाया. राइट साइड पे चेक किया तो 1 कॉपर था, वहां भी 3 लगा दिया.
अमोनिया वाली नाइट्रोजन को +3 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, राइट लेफ्ट साइड पे 2 लगाया, तो राइट साइड पे हमें 2 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ऑलरेडी 2 नाइट्रोजन थे। ठीक है, नाउ लास्ट लास्ट हाउ मेनी ऑक्सीजन यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? 3 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे कितने? 3 है ना, तो जितने ऑक्सीजन है सिर्फ वाटर के साथ वो नंबर लगा दीजिए, आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। You can see 3 oxygen and 3 to the 6 hydrogen. क्या ये मेथड ज्यादा इजी नहीं है ना? दिस मेथड इज इजियर, बट मेक श्योर कि आप इसको अच्छे तरीके से सीख लें, एंड आप सीखेंगे जब व्हेन यू अप्लाई इट ऑन मल्टीपल इक्वेशंस। ठीक है, सो दिस इज द मेथड। अगेन रिकॉलिंग कि हमने क्या करना है, हमने वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट, फाइंड आउट द आइडेंटिफाई द एलिमेंट जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, फाइंड आउट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बैलेंस कैसे करना है? अगर 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करके +6 -6, क्योंकि इसका मतलब ये है चेंज बैलेंस करने का, दैट दिस is releasing 6 electron, sorry, gaining 6 electron, and this one is releasing 6 electron. तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए आपके पास। ठीक है, लेफ्ट साइड पे while balancing the charges, whatever the number you multiplying with the change, लेफ्ट साइड पे तो आप वैसे ही लगाएंगे, राइट साइड पे आप चेक करके लगाएंगे। ठीक है, अगर जरूरत होगी तो नंबर लगाएंगे, अदरवाइज नंबर लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्लियर? नाउ अप्लाई द सेम बैलेंसिंग ऑन दिस इक्वेशन। The equation is H2SO4 plus HI. मैं यहां पर लिख लेता हूं। The equation example 2, H2SO4 plus HI forming Si2NH2, sulfur plus I2 plus H2O। ठीक है, now step 1, find out the oxidation state of all the elements present. So हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, हमेशा ऐसे ही होता है, एंड इन अ सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर इज +6। शुड आई कैलकुलेट हाउ सल्फर इज +6 या कर लोगे? हाइड्रोजन इज +1, आयोडीन इज -1, सल्फर 0, iodine 0, because these are the element, hydrogen +1 and oxygen -2। And what are the elements जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है? सल्फर एंड आयोडीन। ओके, दीज आर द टू एलिमेंट जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। हमने हाईलाइट कर लिया ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ दिस वन इज +6 से -1, एंड दिस इज 0, एंड दिस इज 0। नाउ द चेंज इन सल्फर कितना आ रहा है बेटा? -6, गुड। Change is -6 का, and in this one the change is +1, है ना? +1 का, the change is +1। Now how to balance the change? Multiply this by 6। सिर्फ आयोडीन वाली को 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इट बिकम +6, और 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहां 6 लगाया, और लेफ्ट साइड पे आयोडीन के साथ हमने 3 लगा दिया। लेफ्ट साइड पे 6 लगाया, एंड एज दिस इज I2, 3 लगा के आयोडीन को बैलेंस किया हमने। नाउ हाउ मेनी ऑक्सीजन यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? 4। लेफ्ट साइड पे 4 ऑक्सीजन है, सो 4H2O बना दीजिए, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। चेक कर लीजिए एक दफा।
8 hydrogen, 4 oxygen, 1 sulfur and 6 iodine. Yes, this is a balanced equation. ठीक है? Then beta, so before I wind up this, I'm just sharing a screen. आप इसको इन equations को अपने पास जल्दी से copy कीजिए. We done with this one बेटा. हमारी ये वाली equation तो copy हो गई, done हो गई थी. Okay, we done with this one. Now you have to do these as a homework. So copy these two equations quickly. ठीक है? Done. Now, both equations. Okay, good. Now you have to balance it by using the same method. It's for practice purpose. Let's move forward. And before I wind up this topic, this chapter is done. Let's talk about two most common oxidizing agents. And I'm just talking about these because of their color changes. Okay? Oxidizing agent. One is called potassium. चलो डाइक्रोमेट कर लेते हैं. Potassium dichromate, basically it's K2Cr2O7 and the ionic form is Cr2O7 2 minus. Clear? And it changes color from, याद है? No, it's orange to green. ठीक है? The next one is potassium. Permanganate. That's the same. Potassium magnate भी कहते हैं. ठीक है? Which is KMnO4. This is called MnO4 negative and it changes color from purple to colorless. ठीक है बेटा, so these color changes are very important and you should know labs में भी इस्तेमाल होते हैं and normally. So the main task of this chapter, you should know how to find out the oxidation state. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, the second task is you should know how to find out the change in oxidation state, change in oxidation number. Third thing, you should know how to in which of these given equation or the element going through a largest change in the oxidation state. The next one is basically the balancing of redox equation if you are provided with two half equations, and then balancing of redox equation by using the oxidation number method. So we're done with this chapter, and we done few questions about the change in oxidation state. वो सारी चीजें की थी, and you find these questions very easy, आसान से questions हैं. So complete that worksheet and then let me know if you have any issue with it. Okay, beta. So this is the question number 24. It's about the balancing that we just did. It says the following: half reactions occur when potassium iodate KaIO3. Yani this is iO3 negative. Potassium is a spectator ion with a charge of +1. Okay? Oxidize iodine I2 to ICl negative, whatever it is. The question is, they're giving you two half equation. This is half equation 1. This is half equation 2. Okay? And they ask you, what is the ratio of IO3 negative to iodine in the balanced chemical equation for the overall reaction? ठीक है, अब देखिए, how many electron you can see in half equation 1? नीचे वाली में कितने electrons हैं? So multiply the second equation by 2. तो ये 2i2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा. This will become 4 and this will become 4. You know that before adding we have to make the number of electron same.
So what is the mole ratio between iO3 negative and I2? The mole ratio is 1:2. Correct? The molar ratio is 1:2. ठीक है बेटा, and we done this one, balancing. Similar question in which one is basically um, oxidizing agent, which one is reducing agent. A very simple question. So I think it give you more practice if you do these question by yourself. It's all about balancing of how balance. It's all about like finding out the oxidation number and the change in oxidation state. Okay, so I'm just leaving it up to you. Complete this, and I'm sure that um, which equation correctly represents material balance and the charge balance आपको check करना है, ठीक है? Clear? In these equations, just check the material balance and the charge balance, and I'm sure. Acha, in my worksheet, you can see there's a section B, but these are now optional for us, so we don't have to do it. So we're done with this chapter, and we are going to do our next chapter in the next session, inshallah.